this rainstorm, this August day song, I dream of places far beyond. Road that has led to the dream destinations of man, building a bond of beautiful relations in the history of humanity and civilization. The Trade Center in Sutarkandi is indeed an appreciable initiative that will further encourage and strengthen the trade of Indo-Bangladesh. The infrastructure and the good road condition would surely be leading the road to prosperity. The Sutarkandi Silhat road is in very good condition. There is an all-weather road between Silhat and Dhaka. Northeast India, being a country of subcontinental magnitude, is characterized by wide varieties across regions in terms of natural endowment of climate, soils and minerals. Dharmanagar and Rangnabazar in Tripura are developing into major international trade points. The main items of trade across Indo-Bangla border with value of export in crores are the major item being the coal with 188.64, limestone 9.23, fruits 1.24, ginger 1.24 crore in last few years. The infrastructural inputs with technical know-how has garnered the growth of agriculture and related industries starting from the grassroots level. The demand pattern for different items in neighboring countries. The products like processed food, consumer goods, clothes, tea, medicinal plants, vegetables are in demand. New technologies such as green revolution in agriculture has accentuated the gap. The growth in agricultural output brought the seed fertilizer irrigation technology. Unless exportable surpluses are produced, the northeastern states would not be able to drive the full benefits of all these developments simply by acting as a corridor of export of other countries.
Northeast has to identify a few well-defined trust areas of production so that it can produce in excess of local demand. The fast emerging economic scenario has further developed the transportation systems by strengthening and broadening all highways leading to the identified exit and entry points of the land customs station from business center where the possible time and cost can be benefited. The advantage of geographical and locational advantage is linking Southeast Asian countries by road. The value of trade has substantially increased. Traders, tourists, students, people from different walks of life have walked in. A sense of integration fills the air. The new millennium ushered in new concept and work culture. The routes leading to the international borders from the production centers, commercial hubs and state capitals of Northeast, transportation of goods between the Northeastern region and its neighboring countries through the existing road facilities. The flow of heavy vehicle carry high tonnage facilities. And a host of third country manufactured products including electronic and synthetic goods. With these developments, the Northeast with its locational advantage could emerge as a business transit center for both the SAARC and ASEAN groups of nations. In certain strategic places of Northeast India, large warehouses with business offices of exports and imports from both sides would be built up. Such places would emerge as commercial hub of the region. Between the two countries, infrastructure as well as the relation. So आप कुछ point और बताएंगे हमें clearly? देखिए ये बिजनेस अभी तो बांग्लादेश का जो रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, मेरे ख्याल से इधर का जो मतलब हमारा स्टेट में जो रिलेशन बिल्डअप हो रहा है ये बिजनेस के थ्रू से ज़्यादा हो रहा है. ओके. हाँ, तो बिजनेस के थ्रू से ये उधर का एक्सपोर्टर इंपोर्टर हमारा इधर आ जाता है, हम लोग भी इधर जाते हैं, मतलब एक रिलेशन या कल्चर के रिलेशन बन जाता है, कल्चरल रिलेशन बन जाता है. सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर कंट्रीज. You represent India, they represent Bangladesh, and integration of two countries, right? So what do you see as your future vision? Like what can you like facilities and all regarding like border trade? If you talk of border trade, because you all are witnessing the development of border trade,
So what can you expect? स्पोर्ट से तो इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो बिजनेस हो रहा है, आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में जितना सारा पोर्ट है बांग्लादेश के साथ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट इसी पोर्ट में हो रहा है। 95% इंपोर्ट दिस पोर्ट में हो रहा है। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है और बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी फॉरेन करेंसी मिल रहा है। तो इसलिए दोनों कंट्री का जो डेलीगेट्स है उन लोगों को, मतलब जो पॉलिसी मेकर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उन लोगों को चाहिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी और मतलब कस्टम्स टैरिफ का प्रॉब्लम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना जल्दी हो सके हमको कंप्लीट करके दे दीजिए, क्योंकि इधर से बिजनेस वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, उधर का भी बिजनेस वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा इधर से एक बात है, कभी कभी हमारा इधर लास्ट इस महीने में पार्लियामेंट्री टीम आया था दिल्ली से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का आया था। तो उन लोगों ने हम लोगों को पूछा कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, आप लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो हम लोगों ने बताया एक्चुअली हमारा त्रिपुरा में एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसा कि प्रोडक्ट ही नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश में। आप त्रिपुरा बोल रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, एवरी जो भी हो, वैसे किस तरह के आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं आप? पहले तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा बहुत सारा जिंजर एक्सपोर्ट होता था, और जिंजर, ऑरेंज और ड्राई फिश, कोल, हाँ बहुत सारा एक्सपोर्ट होता था एक्सपोर्ट से। तो अभी हमारा इधर तो एक ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉब्लम है। आप किसी भी चीज़ आपको इधर से एक्सपोर्ट करना है, कम से कम 600 किलोमीटर दूर से आपको लाना पड़ेगा। हाँ, नियर जो स्टेट है हमारा वो है गुवाहाटी, सॉरी जो सिटी है गुवाहाटी, वहाँ से लाने में 625 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हम वहाँ से लाके किस चीज़ हमको एक्सपोर्ट करना है, कॉस्टिंग पे नहीं आएगा। वो तो ऑप्शन क्या है, वही तो एक रास्ता बचा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन है ट्रेन जितना जल्दी हो सके हमारा इधर आ जाएगा। और यू वांट ट्रेन, फास्टेस्ट मींस विल बी ट्रेन। ट्रेन का डेवलपमेंट कैसे है? ट्रेन का डेवलपमेंट तो अभी 30 जून को ये ट्रायल रन होगा एक, तो उसके बाद शायद 2-3 महीना लग जाएगा अगरतला तक ट्रेन का मोर देन कंप्लीट। सो आपके रोड भी अच्छे हैं, रोड कम्युनिकेशन अच्छा है, टेलीफोन है, इंटरनेट फैसिलिटीज है, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग रेलवेज टू कम अप वेरी वेल, और soon it will come, right? And it will bridge the gap between the two countries. Between the two countries, it will build up our relation. Fruits 1.24, ginger 1.24 crore in last few years. And the value of import item like Hilsa fish is 5.40 crore, cement 0.56 crore, processed food products 5.17 crore. With natural flow of goods and transportation system in the potential areas hold the key of the international imagination that is excited by the South Asian Development Triangle. The hub of international commerce between India and fast-growing economies of the world. The Northeast region being the gateway of India to the East, the recent Look East policy is indeed a giant step in the right direction in right time.
The road and the telecommunication connectivity and the adequate power supply at both production and delivery points have helped boost the development of local industry even in remote border areas and further facilitate the cross-border trade with Philippines. The 99% of India's northeastern border encourage growth of trade relationship with its neighboring countries. The geographical location, having varied topography, is full of sunshine and rainfall. The process of progress of integration and nation building rely on modern education with scientific and super technical skills to transmit rational growth. In the endeavor of wider society with scientific values and worldview, I was indeed enlightened to see the education facilities at the edge of international border. Balanced regional and economical development and specialization has been carefully orchestrated through linkages of territorial resources based on production is one of the cornerstone of economical and cultural unity. The existing goodwill and amity will foment the scientific view in harmonious coexistence beyond the defined geographical areas. In the pattern of changing structure of economic scenario over the time, the integrative forces fostering universal values. As the wave of times pass by, the new technological advantages would lead man to master the universe. Amidst business of life, the land of Tripura itself is inviting with the richness of historic heritage. It was a pleasant feeling to escape from a stressful life of business to the magnificent lake palace which was constructed as a summer resort in the year 1930 by late Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur in the middle of a natural lake called Rudrasagar, having an area of 5.35 square kilometers. A good combination of Hindu and Mughal architecture is noticed on the domes of the palace. Stone, this August day song, I dream of places far beyond. Just like this rainstorm, this August day song, I dream of places far beyond.
is rain.